Recently, song Zihale Miskin is released, where actress and Big Boss fame Nimrit Kaur Ahluwalia is featuring, and it's sung by Vishal Mishra along Shreya Ghoshal. Yesterday, Nimrit and Rohit interacted with the media persons, where they talked about this project and also shared their deep feelings on relationships, breaking up and moving on. So जैसा कि आपने कहा, it's such a legendary song in itself. And in general, अगर मैं on paper देखूँ तो with Javed Mohsin, Vishal Mishra and Shreya Ghoshal, I think the project in itself is so exciting. और ऐसा नहीं है कि opportunities एक music video का हिस्सा होने की नहीं आई हैं पहले, पर I think this is the one that clicked so rightly. क्योंकि जब आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट होने का मौका मिलता है which is so legendary in itself, so I think that was the exciting factor, and the fact that there was someone like Rohit who was getting on board with this, and like we said, it was so unexpected. I think हम दोनों बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं. He has a world of his own, I have a world of my own, and just to bring that together, I think that was what was special. Perfect होगा. I know कि आज की जनरेशन में थोड़ा प्यार ये हो गया, थोड़ा डाइल्यूट हो गया एक्चुअली प्यार. आई थिंक दिस इज अ रिमाइंडर फॉर टुडेज जनरेशन, क्योंकि आई थिंक हम लोग एक ऐसी जनरेशन में रहते हैं जो बहुत स्वाइप लेफ्ट या राइट होता है, मुझे नहीं पता, मैं कभी ऐप पे नहीं रही हूँ, बट यू गेट व्हाट आई मीन, कि हम लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में. एंड आई थिंक एक रिलेशनशिप को कामयाब बनाने में दोनों का एफर्ट लगता है, और वो हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं भूल गई है. And I think it's a reminder of what love is. कि हाँ प्यार क्या है. So हमारा day 2 था शूट का जोधपुर में, and we had to shoot at the desert, and there was this entire sunrise sequence, and हम लोग literally रात को इतनी हम सोए नहीं थे basically. 2 घंटे ही सोए थे हम लोग. हाँ, लेकिन the level of excitement that we both had, इस प्रोजेक्ट को अपना मानते हुए, and the fact कि हमें वो shots चाहिए थे, and we were so pumped. So just that kind of energy on set is one memorable experience, because I think it doesn't matter कि क्या आपका एक गाने का शूट है या किसी सीरीज़ का शूट है, it's just about passion. वो एक 10 second का रील भी हो सकता है, but that kind of passion that I saw with Rohit and myself and the entire team, that was commendable. It was so beautiful to even witness.